students, in this video we will learn how to find out square root by division method. There are many methods to find out square root, like we have done prime factorization, repeated subtraction of odd numbers, and division method also. Division method is the most easiest method. I know in some questions you will find difficult, but after doing 4 or 5 questions you will find it the easiest. Fine, so let's start. Suppose I have to find out the square root of number, suppose 1296. Fine, so the first step, what we do, we will make the pairs of the numbers from the right hand side. 96 is one pair and 12 is one pair. Now what we have to do, we have to just write a number over here. Before starting this, just please understand, square root we work in pairs only. That means whatever number we are writing here, same number we have to write over here, and the product of these two numbers will be either equal to or less than this number. Suppose if I take 1 into 1, it is 2, very small. We can try for the next one. 2 into 2, again very small, 4. 3 into 3, 9, and 4 into 4, 16. So 4 into 4, 16 is the bigger one, so we can go for 3 into 3, 9. Fine. So now when we subtract, we will get 12 minus 9, 3. Now after this step, what we do, we will just copy down the complete pair over here. That means 96 will come over here. Fine. Then in the next step, what we do, we will just do the double of this number. Do the double of this number. Whatever is here, we have to do the double of that one. 3 into 2, 6. 6 we have to write over here. Okay. Now whatever number we are writing here, same we have to write here. As we have discussed, in the square root, numbers will go in pairs. If the number is a perfect square and the unit digit is 6, then we know unit digit comes either in the square of 4 or in 6. So we can try for both. If we are writing here 4, fine, so that means 64 into 4 and the product will be 256. This is very small. So we can try for the next number 6. If we are writing 6 over here, then we have to write 6 also here. Then 6 into 6, 36. And when we multiply, we get exact 396. That means we will use here 6. So 66, same we have to write over here. So 66 into 6 will be 396. And we can see we are getting the remainder 0 over here. That means 1296 is the perfect square of which number? 36. And this is my answer. I hope it is clear. Let us try for one more example. ठीक है, चलो एक और देखते हैं करके. Suppose I am taking one more number. Let's try for 2304. 2304 के लिए ट्राई करते हैं. Fine. Okay, again what will be the first step? We will make the pairs from the right hand side, 04 and 23. Process will remain same. We have to start with number over here. So a number will move in pairs. Suppose if we start from 4 into 4, 16, 5 into 5, 25, then 5 into 5, 25 is a bigger one. So what we do, we will take here 4. So 4 into 4, 16. Fine. When we subtract, what we'll get? 13 minus 6, 7. And what we do now? 04 as it is. The pair will move here down, 704. I hope this much is clear everybody. ठीक है, तो in the next step what we do, चलो इसका डबल करते हैं. ठीक है ना, 4 into 2. 4 का डबल क्या होता है भाई? Double of 4 is 8. Now whatever we will write over here, same we have to write over here. ठीक है, तो चलो क्या, 4, number is 4. 4 comes in the square of either 2 or 8. If we are writing 8 here, चलो 82 into 2 क्या आता है? 164. बहुत ही छोटा है. ठीक है, let's try for 8. चलो 8 ट्राई करते हैं तो we are getting 704. So what number we should write over here? 8. ठीक है, चलो we are writing over 8, 48.
तो हमें क्या मिलता है 704. So it is a perfect square. Now 2304 will be the perfect square of 48. तो ये मेरा आंसर है 2304. Again I am repeating the step. In the first step we have to use same number. ठीक है, number should be either smaller than the first one or the equal to this one. ठीक है ना. Then we have to do the double of this number, whatever is coming over here. ठीक है, and again I have to use same pair over here. Now the question is, अगर नंबर 4 डिजिट का है ही नहीं, नंबर इज़ नॉट इन पेयर. ठीक है, तो क्या करें. चलो आई एम टेकिंग वन नंबर 625. इट इज़ ए 3 डिजिट नंबर. व्हेन वी आर मेकिंग द पेयर तो नंबर विल नॉट बी इन पेयर. सो व्हाट टू डू, बट इट विल बी सेम. द वी विल स्टार्ट मेकिंग पेयर फ्रॉम द राइट हैंड साइड. पेयर बनाएंगे 25. अब यहाँ नंबर नहीं है, either we can add 0 or it will be as it is. It is my choice if I want to add 0 or not. ठीक है, तो now what we do here, simple. I will write here 2 into 2 4. ठीक है, because 3 into 3 9 will be greater than this one. 6 minus 4 2. and अब क्या करें, इसको कॉपी करते हैं 25 को. The complete pair will come down to 25. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डबल ऑफ 2. 2 इंटू 2 इज़ 4. अब जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे. 5 कम्स इन द स्क्वायर ऑफ 5 ओनली. ठीक है, तो चलो 5 ही लिख के देखते हैं. व्हाट वी आर गेटिंग 45. अगर 5 यहाँ लिखते हैं तो 5 ही यहाँ लिखेंगे. देन 45 इंटू 5 क्या मिलेगा हमको, 225. दैट मीन्स वी विल गेट आवर आंसर. तो 45 इंटू 5 इज़ 225. सो दैट मीन्स 625 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 25. चलो अब एक नंबर ट्राई करते हैं, विच इज़ अगेन नॉट द 4 डिजिट नंबर, इवन नंबर. ठीक है, एक नंबर लेते हैं हम, दैट इज़ ऑफ 5 डिजिट नंबर 15625. ठीक है, लेट्स ट्राई फॉर दिस वन 15625. ठीक है, चलो पेयर बनाते हैं. पेयर्स राइट से ही बनेंगे, दिस एंड अगेन 1 इज़ नॉट इन पेयर. तो आई कैन ऐड 0 इफ़ आई वॉन्ट. इफ़ आई डोंट वॉन्ट आई विल नॉट ऐड. लेट इट बी लाइक दिस ओनली. ठीक है, तो नाउ देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ 1 नंबर ओनली. 1 इंटू 1 1. ठीक है, 1 into 1. अब subtract करो, it will be 0. Now in the second step, this complete pair will move down. तो I'll get over here 56. ठीक है, अब क्या करें, इसका डबल करते हैं into 2. 1 into 2 is 2. ठीक, अब जो नंबर यहाँ लिखेंगे सेम नंबर I have to write over here. चलो ट्राई करते हैं. If I am writing 21 तो 21 into 1 बहुत छोटा है 21. चलो 2 से ट्राई करते हैं. 22 इंटू 2 44 कैन बी. अगर लेते हैं 23 तो इंटू 3 69 बहुत बड़ा हो जाएगा. तो वी कैन गो फॉर 22 इंटू 2 44. राइट, सब्ट्रैक्ट द नंबर. व्हाट वी आर गेटिंग 12. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप क्या करें, अब द कंप्लीट पेयर 25 मैं यहाँ लिखूँगी 1225. ठीक है, एंड नाउ अगेन प्रोसेस विल रिमेन सेम. ना दिस नंबर 12 आई विल डू द डबल ऑफ दिस वन. तो 12 का डबल क्या होता है भाई, 24 डबल ऑफ. ठीक है, अब जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे, सेम प्रोसीजर. तो 5 कम्स इन द स्क्वायर ऑफ 5 ओनली. ठीक है, तो चलो 2 4 5 को एक रफ पे ट्राई कर लेते हैं. ठीक है, क्या आता है, इट इज़ कमिंग 1225 ओनली. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे. एंड यू कैन सी हेयर इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल. दैट मीन्स 15625 is the perfect square of 125. It is clear. I hope it will be
good for you. You are able to understand this one. So okay, bye bye, take care.